Yes, Assalamu alaikum. Today we will be discussing about weaving. What is weaving? What are the different techniques of weaving? And perhaps you have yesterday gone. आप लोगों ने देखा है कल आपने weaving के बारे में practical training तो ली है जो हमारा हैंडलूम वीविंग का सिस्टम है, हाउ इट इज़ वर्किंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट हैंडलूम और कैसे इसको चलाना है. जस्ट गिव अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ इट और प्रैक्टिकली दिस थ्योरेटिकली विल नॉट वर्क अनलेस आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रॉपरली स्टडी करेंगे. सो आई हैव बीन गिवन द सेकंड लेक्चर दैट इज वीविंग मेथोडोलॉजी ऑफ पश्मीना. I know these things I am just repeating because whenever we go, what is Pashmina? This thing yesterday I have already described to you. What are the BIS standards? What are the different properties? Here again, I just remind you that a Pashmina fiber is a ortho-mesocortical structure and it's not an ortho-para. So it does not resist any type of wear and tear. If you when we put it into high speed wear and tear, it will never normally break. Even if a yarn, uncoated yarn, if we put in the machine, it will get completely damaged. ये पूरी खत्म हो जाती है, पूरी मशीन चलेगी नहीं, आधे 5 सेकंड के बाद वो कटती है. इसीलिए जब इसको मशीन में अगर चलाना है तो इसको हमें कोई कोटिंग करनी पड़ती है या एक कैरियर फाइबर लगाना पड़ता है. दिस इज जनरल टेक्नोलॉजी क्या क्या इसमें आना चाहिए, कैसे भी है. जैसे आपको पहले ही है हार्वेस्टिंग के बाद मैनुअल डिहेयरिंग, ग्लूइंग या सोकिंग, फिर हमने कोम्बिंग किया और स्पिनिंग. स्पिनिंग के बाद जो 3 स्टेप्स आते हैं बिफोर वी गो फॉर डाइंग एंड फिनिशिंग, दैट कम्स अंडर वीविंग. इसमें पहला जो पहले हैंग्स कैसे बनाते हैं जिसको हम थोड़ा सा ग्लूइंग करेंगे, गिव ए स्लाइस ट्रंक टू द yarn. Then we put it the views, handloom, and then finally it goes to finishing and dyeing and finishings. This is general same operations what we are telling. Before going these things, just give a brief of some of the components of the weaving. What is the process of? Actually, there are 2 methods of making any garment. One is weaving, another is knitting. Weaving is interlacement of yarns in a right angle. Interlacement of yarns. Whereas this knitting is interlacement of loops. When we go for knitting, there you have to make a loops. आप बनाते हैं जब स्वेटर बनाते हैं कुछ तो एक वो पहले लूप पहले बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरा लूप बनाते हैं. That is called knitting. And here we put a tana or whatever warp, then put a thread against it in right and left side. That's called knitting. Knitting is interlacement of yarns. या कल तो मैंने आपको yarn के बारे में बताया. yarn का thread जो हम which we have made from the fiber after giving proper twist. Very good. ये चीज़ आप याद रखें. twist देने के बाद जो yarn बनती है, then only it goes. If it's a loose twist, it will not go with the proper weaving system. Then warp, a thread running lengthwise. जब हम ये बनाते हैं तो पहले हम एक थ्रेड्स लेंथवाइज थ्रेड्स बनाते हैं, उसको वार्प बोलते हैं. जो ये रनिंग पर्टिकुलर लेफ्ट साइड से जो बैग में डालते हैं उनको वेफ्ट बोलते हैं. लेंथवाइज इज वार्प एंड वेफ्ट वाइज इज वेफ्ट. देन देयर आर एंड्स. ईच इंडिविजुअल थ्रेड वार्प वाइज इज कॉल्ड एंड एंड ईच इंडिविजुअल थ्रेड ऑन वेफ्ट वाइज इज कॉल्ड पिक. ये चीजें आप क्लियर किए. देयर आर दिस 5 टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज वीविंग, what is warp, what is weft, what is ends and what is एक इंडिविजुअल जो थ्रेड जो ऊपर से नीचे लाते हैं उसको हम एंड कहते हैं और जो इधर से लाते हैं उसको पिक कहते हैं. बिकॉज वी हैव टू मेक पिकिंग. जब हम ये शटल चलाते हैं तो हम कहते हैं हम पिकिंग करते हैं. जब हम पहले ताना बनाते हैं उसको एंड्स बनाते हैं, उसी को वार्प बोलते हैं और जो चलाते हैं उसको वेफ्ट बोलते हैं. सो फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेप बिफोर मेकिंग द एनी weaving is hand preparation. The yarn you have prepared in the bobbins, that has to be put to give it a glow stage. Because इसमें ज़रूरत इस चीज़ की थोड़ी सी strength होनी चाहिए. At this stage, जो specialist weavers होते हैं, they separate different types of yarns. जो आपने बहुत से इनसे लाई होंगी
बिकॉज एक स्पिनर तो नहीं लाता है, ही हैज टू गेट इट फॉर 4 शॉल्स एट अ टाइम। जब वो वाप बनाता है तो कम से कम 4 शाल का वो ताना बनाता है, जिसे ताना कहते हैं, वाप बनाता है। हाँ, जो 4 शाल के लिए तो उसको 1 किलो चाहिए। 250 ग्राम अगर हम 1 शाल का ले लेंगे तो उसको 1 किलो का यार्न होना चाहिए। वो 1 किलो का यार्न एक आदमी से तो नहीं मिलेगा ना, उसके अलग अलग होती है। देन दे सेपरेट इट, the one which has a better twist, जिसकी अच्छी ट्विस्ट होगी, दे सेपरेट इट, कीप इट फॉर हैंग्स फॉर बॉब। जिसकी थोड़ा लूज होगी वो वेब में रखते हैं। जो हाईएस्ट ट्विस्टेड होगी ना, दे हैव टू बी सेपरेटेड। जिसकी ट्विस्ट अच्छी होगी दे सेपरेट इट और उसके हैंग्स बनाते हैं। देन दे गिव इट ग्लू, इसमें भी ग्लू करते हैं। ग्लूइंग दे गिव नॉर्मली सरेश, आप जानते हैं सरेश? इसे जो जब आप वार्निशिंग करते हैं तो वो प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है नॉर्मली है वार्निश। फॉर वार्निश में जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से वो निकलते हैं ना, जो वो एज इफ वो स्लाइड्स जैसे, वो स्लिप्स जैसे होते हैं, वो बाय वेट नॉर्मली ये लोग बेचते हैं। दे वो पानी में उगाल के उसको गर्म पानी में डालते हैं, उससे थोड़ा ये आती है, ग्लूनेस आती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। गम स्टिक, गम होता है बेसिकली, वो गम है, प्लांट गम, वो प्लांट गम मटेरियल होता है। हाँ हाँ, वो गम होता है, उसको और आटे का ग्लू दोनों को मिला के ये देते हैं ताकि ये इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ, अदरवाइज हाउ कैन इट रन। इसमें स्ट्रेंथ इतने वो मारता रहता है ना, उसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ताना को डालते हैं। हाँ, ताना को वो डालना जरूरी पड़ता है जब, तो उसके बाद वो ताना बनाते हैं। और इस ताना बनाने के लिए ये लोग पहले जो वार्पिंग को ताना बनाने बोलते हैं। वार्पिंग इज द अरेंजमेंट विच इज, ये आपको दिखाया ना, ये दिस इज वार्प, ये ताना बनाते हैं, है ना। और ये आपको फिर बाद में वेफ्ट, यहाँ से स्टार्ट जब करेगा वो एक थ्रेड लगाएगा, फिर एक थ्रेड लगाएगा, दिस इज वीविंग, है ना। ये ताना बनाने के लिए इसको पहले कैसे बनाया जाए, क्योंकि 4 शाल का एक साथ बनाना है, ग्लू में चढ़ाना है, एक खास सिस्टम से होना चाहिए ना। नॉर्मली हम आप उठा के इसको सीधा थ्रेड को उठा के नहीं बना सकते ना। पहले इसमें वाप जो इन्हें हैंग्स बनाए, हैंग्स को फिर वो अपने वो बॉबिन्स जिन्हें दिखाए होंगे आपको, वो वुडन बॉबिन्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें चढ़ाते हैं, पहले ग्लू करके उसमें चढ़ाते हैं। उसके बाद ये लोग ये ऐसे बनाते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऐसा है। ये आपका हैंक है, हाथ में जो बड़ा है, इसमें उसने यान रखा है। ये लोग नॉर्मली क्या करते थे, दे पुट आयरन रॉड्स, 4 शाल का लेंथ पूरा देखते हैं, दैट इज 3 इंटू 2 मीटर का एक होता है, 8 मीटर का एक लेंथ ले लेते हैं। देन दे पुट इट थ्रेड, वो 2 आदमी, एक आदमी इधर से आता है, एक आदमी इधर से आता है, दे मेक ए वाप। दिस इज ट्रेडिशनल सिस्टम। बट ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम है। दिस इज सिंस सेंचुरीज वाज गोइंग ऑन। ट्रेडिशनली इलेक्ट्रिक आयरन रॉड्स लगा के ये लोग ऐसे बनाते थे। नाउ व्हेन वी स्टडीड दिस, we found that it has all full of tragedies. 2 आदमी बैठने हैं, पूरा दिन बैठेंगी, पूरा दिन ऑलमोस्ट उनको लगता है कि एक ताना 4 साल का बनाने में, और टाइम भी लगता है। So we thought of there is need of some amount of interventions and we developed a warping machine. ये हमने warping machine डेवलप की, ये wooden warping machine, because इसमें हम आयरन नहीं लगा सकते हैं, we cannot use any here, it will get damaged. Pashmina is very fragile fiber. I always say, you remember, it's a fragile fiber. We made a ताना making machine. This is called warping machine. वुडन बनाया हमने, एक बड़ा रोल जैसा, डिफरेंट स्टेप्स करके। इसमें एक स्टीपर है यहाँ पर, इसमें दिखाई नहीं दिया है हमने। एक ये इधर से हम 5 थ्रेड्स निकाल के 10-15 थ्रेड्स में डाल रहे हैं, 20 थ्रेड तक। इधर से हमने ये कॉम्स जो उधर लगाए थे ना, बॉबिल्स, उसमें थ्रेड्स को रखते हैं बाहर। फिर ये स्लोली एक ही आदमी इसको एक साइड से उसको रख दिया 10 बॉबिल्स में, एक स्लोली वो हाथ से इसको बना के एक साइड से लेके ही मेक्स ए कंप्लीट ताना। वो कितने लेने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द शाल, है ना। उसके हिसाब से ये हमने ये मशीन वी हैव गिवन इन वैली में हमने 20-25 दिए थे डिफरेंट
जो लोकेशंस में है। कभी अगर आप LPT डिवीजन आएंगे या इन लोग को दिखाएंगे, वी हैव वन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, बड़ा अच्छा है एंड इट्स वर्किंग वेरी इफेक्टिवली। इससे ट्रेजेडी इनकी कम हो गई। 2 आदमी के बदले एक ही आदमी कर सकता है, और वो एक ही शाल नहीं, वो 8 ही शाल नहीं, वो उसको अगर वो उसको 1 ही घंटा लगता है इसमें बनाने में, और वो ही हैज स्टार्टेड अर्निंग मोर, है ना। वेरी सिंपल इंटरवेंशन करके हमने इसको डेवलप किया वहाँ पर। इसको हमने फिर कंपेयर भी किया था कि कितना इनको कॉस्ट फैक्टर बढ़ता है, फॉर 150 टाइम्स इसका टाइम आवर भी बढ़ जाता है, और ये सब कुछ देखे इसकी कंपेरेटिव स्टडी की थी हमने। देन इसके बाद लूम की बात आ जाती है। हमने पहले ट्रेडिशनल लूम, जिस लूम, अब इसमें डायग्राम थोड़ा सा, ये तो आपने कल देखा, ये इसमें साज है ना, इम्पॉर्टेंट, दीज रोलर्स आर इम्पॉर्टेंट। ये जो हमने चढ़ाए, जो यान बनाई ना, वो वाव, इनको इन पे चढ़ाया जाता है ना, ये रोलर्स पे। फिर एक रोलर को फिर दूसरे रोलर के जाड़ के तीसरे रोलर में ला जाता है, तो ये इसमें टोटल रोल हो जाता है। जो हमने पूरी वाव बनाई उसको वो राउंड करते हैं उसको एक बड़े रोलर पर, और फिर 2 रोलर्स के बीच में से इसको घुमाते हैं, और यहाँ आदमी बैठता है राइट साइड में, एंड देन ही स्टार्टिंग पिकिंग। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ये ही इज सिटिंग एट द एंड, यहाँ से वो इसमें थ्रेड्स, ये कंगियाँ होती है, इससे ये ऊपर नीचे करता है पाँव से। The role of these is to give a design. The role of these combs are to give design, because उससे वो threads अलग-अलग वार्पिंग में अब जैसे वार्प में होते हैं ना अलग-अलग रैप्स, वो किसी के ऊपर दे दिया, किसी नीचे दे दिया, कैसे देगा वो आपने उसके पैडल के हिसाब से, उन्होंने दिखाया भी दिया होगा आपको वो पैडल कैसे चलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हाउ दिस पैडल्स एंड डिजाइन आर मेड। वार्प जिसे येन कहते हैं कश्मीरी में, इज टेकन इन ए वार्प ड्रेसर, जो से हम साधनगर भी कहते हैं, हु फिक्स द ईच वार्प थ्रेड इन द साज के बीच में से जो चलाता है। देन लूम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ वुड विच इज अ bench on which 2 people sit comfortably. Warp is installed on the loom. The threads are being just in the horizontal direction to make the fabric. इसमें भी हमने देखे कि when they were using these types of looms, it was एक आदमी को 1 हफ्ता लगता था एक शाल बनाने में. Then less remunerated, minimal wage. Then we made a slight interventions. We developed 8 paddle shuttle operated. पहले तो वो सिर्फ ऐसे चलते थे। Then we made a shuttle operated looms, जिससे शटल से वो स्पीड बढ़ गई। जैसे शटल वो थ्रेड इस शटल में डाल देता है, ये कॉम्ब शटल्स है इसके बीच में, तो वो ही कैन मूव इट क्विकली, एंड दिस इज 8 पैडल्स। इसमें इन दिस 8 पैडल यू कैन पुट ए सेल्फ डिजाइन ऑन द फैब्रिक इटसेल्फ। डिजाइन जैसे आपको चक बनानी है, आपको एक बॉर्डर टाइप चढ़ाना है, चक है, बॉर्डर है, सेल्फ डिजाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन बना सकते हैं। बट लेकिन दैट इज डिपेंडिंग ऑन द जो वीवर है, ही हैज टू बी गिवन ए क्लासिफाइड रीडिंग, हाउ एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाया जाता है उनको। ही इज बीइंग टेल दैट आप इस थ्रेड के बाद इतने थ्रेड्स ऐसे चलाएंगे, इतने थ्रेड ऐसे चलाएंगे, वो ही हैज अ डॉक्यूमेंट्री रिटन देयर, देन ओनली ही मेक्स इट, and that is more especially for the Wani type of. This is comparison, we have found how much it is percentage effectively. The most effective and very highly remunerative but highly, which is called to be said to be most expensive type of shawls. This is Wani shawls. Wani shawls, they are woven with the help of sticks. जिनको हम वो वुडन स्टिक्स होते हैं, they are highly costly. A single shawl will cost you 80,000 to 1 lakh rupees. Same pashmina shawl, same material, but a self design. Wani shawl की एक advantage ये है that we can see how the design comes on the shawl itself. And for this they have to be very specialized weavers, and they are being given complete, a person first writes the complete bibliography of the how each thread is to be put. The documentary sheets are given to you. He writes it
जो उनके डिज़ाइन, जैसे आपने ये डिज़ाइन बनाना है, यू हैव टू मेक सपोज ड्रैगन बनानी है, यू हैव टू गिव इट, जो उनका राइटर एक आदमी अलग होता है जो लिखता है कि आप उसको बोलेंगे मुझे एक शाल में ड्रैगन बनाना है, ही विल मेक फर्स्ट ए फोटोग्राफ ऑफ द ड्रैगन, देन फुल शाल एक पेज पे बनाएगा, देन ही विल make write it after how many threads we have to put red, after how many threads we have to put yellow, after how many threads we have to put green, so that design जो आपका कलर वहाँ पैटर्न दे होगा, exactly that color pattern comes of the shawl, fabric के ऊपर ही आता है, but this is that is why it takes around 3 to 6 months to be a shawl. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पहला सबसे है that के डिज़ाइन बनाना, then जिसे कश्मीर में तालीम बोलते हैं, तालीम means he is giving a written way how to write how fabric to advertise. वहाँ पे सेम, but this is put on the base of fact. वहाँ पे कोई फर्क नहीं आती, वहाँ तो सेम वही जो हमने पहले बनाया, लेकिन वेस्ट पे कैसे क्या कैसे, और इसमें कौन सी डाई होती है, yarn डाई होती है, they dye at a yarn stage different yarns and that is put up. यहाँ देखा होगा इसके पास यहाँ ये तो उसने जो बनाए हैं ना डिफरेंट कलर्स के स्टिक्स जो है उसमें अलग अलग कलर आप देखिए यहाँ पे, है ना, देन दे पुट इट डिफरेंटली, ही हैज से आफ्टर दिस मच यू हैव टू पुट, आफ्टर दिस ही हैज टू पुट सो मच, दिस इज ऑल बीइंग रिटन इन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड. लास्ट जो आप आज की दुनिया में आई है ऑटोमेशन की वजह से, Power loom is also, but it's all industrial operation. Heavy requires a pashmina with nylon. जैसे मैंने आपको कहा blending or carrier fiber is must. Without that, this cannot be run here. Weaving is done at power loom, inflicting greater mechanical force. Dissolution of nylon is must after we remove it. It deteriorates the quality of pashmina shawl, more piling and less span. Then we have also conducted some survey how hand spun traditional loom, hand spun woolen loom, that is machine loom, how its quality is being verified and what are the effects of this machine spinning on the quality. And we have found that this is different parameters we have studied, what are the normal parameters to be studied for that we have carried out work in different way. Hand value also, how much soft it comes, how much it means, that is the general hints. So, in nutshell, machine weaving leads to deterioration in the overall quality of the globally recognized pashmina products. Traditional practice of weaving need to be preserved to sustain the pashmina shawl industry. Improvisation of traditional tools and techniques is very essential. We have developed something, if somebody can get more improvisation in the tools, that's highly comfortable, and again we should have a separate labelings for both hands and machines. See, I will tell you, this weaving is an art. Weaving is a technique. You have to learn it by the viewers. By theoretically, just giving you idea may not be sustained unless you see the different components of loom, how it operates, what are the difficulties when you operate it. The person, a weaver, when he sits on the loom, what difficulties he will really get, that is to be actually studied. This is purely a practical type of work and has to be carried out in combination with the master craftsmen. If you go for Wani type of weaving, you have to have specialized master craftsmen. And for them, it takes, if you want to learn this Wani shawl, it takes 3 to 4 months to first learn how to make different things. Rest other things, they are very small, normal hand weaving, handloom weaving, that's not so difficult, but you have to concentrate for 3-4 days and the done can be. But make them and ask them, से पूछिए कि आप भी जब आप बनाते हैं, इसमें अगर हमें ये थ्रेड कट गया, हम कैसे इसको जोड़ लेंगे, अगर हमें ये ताना बनाने में ये डिफिकल्टी आ गई, आप बना रहे हैं तो इसमें कैसे आप ठीक करेंगे. Unless you make tana, you can warp yourself, you cannot make the weave itself. Weaving directly नहीं कर सकते जब तक आपने warping नहीं सीखी होगी. Warping is an essential component. फिर उसके ग्लोपिंग, फिर चढ़ाना, how to raise that worm on the loom, वो भी सीखना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं सीखा, अगर हमारे पास
वह बनाया भी हो, सब भी किया होगा, लेकिन उसको साज, प्रॉपर साज में नहीं लगाया गया, तो आपकी फैब्रिक सही नहीं बनती है। ये सब व्यूवर्स आपको दिखा देंगे, मे बी कल ने कुछ दिखाया होगा, आज आपको सिर्फ फिर उनसे अब आपको थोड़ा आइडिया और आया होगा, सो यू कैन सी एंड आस्क देम व्हाट आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड अदर थिंग्स, एनी अदर थिंग्स व्हिच आई कैन get from my side. You understand this thing? कार्य आज भी ऊपर से ही चला गया कि कोई समझ आ गया हैं? Especially if you are running a full handicraft system, अगर अपना एक यूनिट बना रहे हैं, इससे क्या होगा कि you will have when you have idea, you can ask the viewer, नहीं हमें ऐसा डिजाइन क्या चाहिए, आप उसमें ऐसे करो, एटलीस्ट आपको तो ये ख्याल रहेगा कि वो गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरी कमाई का पैसे को वो तबाह तो नहीं कर रहा है ना, है ना, ऐसा भी होता है कभी कभी, वो उसने गलती की तो आपको ये मालूम नहीं होगा। सो यू इफ यू अंडरस्टैंड, यू लर्न वर्ड लूम के बारे में, मे बी वी विल नॉट डू, हम लोग खुद ही थोड़ी सा सब कुछ करते, लेकिन जब व्यूअर बैठेगा तो यू विल गाइड हिम कि हमें बॉर्डर वाला चाहिए, शाल चाहिए, तो आप उसको बोल देंगे हमें ये बॉर्डर चाहिए, कलर ये ऐसा है, देन ही विल मेक अ डिज़ाइन आउट ऑफ दैट। आजकल चेक्स का बड़ा डिज़ाइन चल रहा है, आजकल चेक्स है, देन सेल्फ चेक्स, जिससे उसके ऊपर भी लोग फिर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, या साइड वाले बॉर्डर वाले, या कुछ लोग तो सेंटर में एक सर्कल बनाते हैं बीच में, वो फैब्रिक के ऊपर सेम स्कैन वो, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन यू मेक। अंडरस्टैंड इट, थोड़ा समझिए इसको, लूम को क्या है, कैसे चलाना, कैसे साज चढ़ाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।